of experience in customer experience management. And I have worked in different industries as well. So majorly my experience is in telco and now in logistics and shipping company. So currently I'm working in Maersk and I have worked in different departments, including customer experience, operations, and obviously recently there have been a lot of focus on digital transformation. So I have worked in digital transformation as well. Am I audible to everyone who has joined? Can you kindly confirm? Majid, Rimsha, Usma, Anjum. If anyone can kindly unmute and confirm if I am audible to everyone. Uh, Sakib, can you kindly confirm if the screen is visible and I am audible? Okay. So today I'll cover the topic of customer experience management. We will discuss the different areas of experience management and how it impacts the customer. So what do you guys think experience management is? Any input from your side? Okay, guys. So let me take you through the concept of experience management and what we will be covering in this presentation. So I'll take you through the concept of the customer experience management. I'll explain why do we need experience management and how we can implement experience management, and how to make how can we make the most out of CX in any organization and how to measure it while we are doing it. So customer experience management is actually an end-to-end journey of customer with a particular brand. So it starts from the day customer first interacts with the brand, either it's in the form of communication, marketing, anything. So customer perception starts building from the day he sees a particular ad regarding a product or service of a particular company. So from that day till the customer uses, stops using and post your services use as well. So the customer journey map starts from the perception starts building when the customer sees any of the advertisement or paper ad or any digital conversation regarding your brand, and that perception keeps on building while the customer uses your particular services or once he stops using and moves on to other brands as well. So the perception is built along the way with every interaction that the customer has with a particular brand. So customer experience management is at each and every stage of customer life cycle with a particular brand. So whether it's an interaction on the call center, whether it's an interaction on the digital channel, whether it's an interaction anywhere across the channel, across different channels with the organization. So that interaction continues, and similarly, the experience management continues along the cycle. The perception that is built can be based
based on the particular experience, or it can be just a one-way interaction that the customer has with your brand. So customer experience management is an end-to-end journey of the customer with your brand, and it can be various interactions that it has throughout the journey. So there are a few myths around customer experience management which we come across along different channels, and we discuss them as well. So one of the misconception that is customer service is equal to customer experience, while that's not the case. So customer experience is a very holistic area. So it covers your product, it covers the complaint management process, it covers your marketing, it covers each and everything across the organization. While customer services is a part of customer experience management, which is a much broader area to look at. Secondly, customer services is a very reactive approach, because once a customer faces any issue with your brand, then he comes to you and you serve the customer and also resolve their issues, while customer experience is a very proactive approach. So you try to create products, you try to create marketing, and you try to create different value added services which the customer is able to use conveniently. So if the customer is not facing any issue with your products and services, obviously there will be less chances of them to coming back to you for post sales services or any complaint. So customer experience is a very reactive approach, while customer experience is a very reactive approach. Sorry, customer services is a very reactive approach, while customer experience is a very proactive approach. And you design your journeys in a way that customer faces convenience throughout the journey. Secondly, there is also a very big misconception around customer experience, that it cannot be measured. So there has been a lot of research and a lot of ROI studies on customer experience management. Though there can be areas which are very small and might not be measurable, like if you change a message delivered to a particular customer to communicate something, or if you make minor changes to your IVR, and if you make a few changes to your VAS service. So there can be areas which cannot be directly measured, but overall customer experience can be measured holistically, and it has huge impact on your ROI. So there is this misconception is also wrong, that customer experience cannot be translated in hardcore numbers. Thirdly, customer experience management is not the task of a particular department. So I recently, if you come across organizations, because there is a huge focus on customer experience and organizations are moving in this direction, most of the organizations create a particular department of customer experience management, and that department is responsible for majorly for the experience management activities. Recently, there has been a lot of change recently in the experience management, and the whole organization needs to focus on it. So if a particular team is set responsible for it, and there are not a lot of people who are engaged within the organization, the experience management will not be successful. Why do I say that? It's because if you look at an organization and the interaction points, there are a number of interaction points within an organization that customer comes across. So you have your sales and service centers, or your retail stores, you have your call center, and you have your WhatsApp services, and many other different services channels that customers interact with the organization with. If the services are not being provided well equally across all channels, the customer experience will not be delivered. So you must have heard about Omni channel. Farooq, can you kindly share your any customer experience that you recently have across different channels?
Faru, can you hear me? Okay. Let's continue. There are different channels across which the customer comes across while interacting with an organization. So the experience should be omni-channel. What do I mean by omni-channel experience? By omni-channel experience, I mean that if a customer comes to your call center, or to your retail store, or he comes to your website or any other digital channel, the process should be uniformly aligned across these channels so that the customer is not moved across different channels and it doesn't get a solution as well. So what do I mean by that? So recently I had an example where I purchased a camera phone, um, a smartphone, in fact, online. And when the phone came, the chargers were missing. So I called them and I asked for the charger, and they routed me to their retail store. When I went to their retail store, they said that this complaint can be managed online only because you have ordered the smartphone online. So I was hopping between the channels, but I was not getting the solution. So the customer experience has to be across the organization and omni-channel, so that the customer can get a solution for the problem he is facing, rather than hopping between different channels. So one of the myths that customer experience has to be delivered by a particular channel only is also wrong, because it is a responsibility of each and every channel that you move to. Okay, why do we need customer experience? So there has been a number of different researchers across different areas. I have just jotted down a few 4 5 areas for you to understand the importance of experience in today's era. So 57% customers stopped buying from a company because competitors offer better experience. So in a industry where there is this high competition, you cannot survive without customer experience management. If you do not offer the experience that the other competitors are offering, your customer will move on to other competitors. 84% of customers do not trust AdWords anymore. So the word of mouth and the reviews that people give have become so important that customers don't look at the advertisement for purchasing. Rather than that, they look at the overall feedback that they get from different people to continue buying. So recently, you must have noticed there is a huge trend of people reading reviews before going to a particular brand. So I do that often as well, and I think you guys must have noticed that whenever you want to buy something, many of us first go online, see their Facebook page or any other channel where there are reviews regarding the brand, and then they go and buy that particular brand. So rather than putting ad on a paper, rather than putting digital ad, now people are more interested in looking at what the other people say about the particular brand. So the word of mouth has become very important, and that positive word of mouth can be generated only if you have a good experience with a particular brand. Thirdly, acquiring a new customer costs 7 times more than maintaining an existing one. So if you have an existing customer and he makes repeated purchases from you, that will be cheaper for the organization than rather acquiring a new customer and putting a lot of effort in reaching out to customers, telling them about their brands, convincing them to buy the brands. So you have already put that effort into the customer that exists with you, that's there with the organization. So what you can do is you can focus on customer experience to retain the existing customer. If that customer will stay with you, at the end of the day, it will benefit you by repeated purchases rather than focusing on acquiring new customers. So the fourth and last one is news of bad services reach twice as many ears as that of good services. That the word of mouth area that I have already talked about. So if you give bad reviews on different channels, if you post it on your Facebook page, if you post it on any social media, there are a number of people reading those reviews, and obviously that will not consider your brand once they have to buy something. Um,
This is why the need for customer experience is huge in today's era, and that will keep growing. That's not going to stop, because with digital movement and with e-commerce, the need for the positive reviews will grow bigger and bigger with the past as the time goes on. So I'll like to share some good and bad customer experiences with you. If any one of you have a good or bad customer experience that you would like to share, I'll be more than happy. Okay, so let me continue with this. So there was a there have been very good and bad experiences locally as well as internationally while buying. So I'll quote one of the examples. So in 2018, I uh, bought shoes from an international brand, and when I received the shoes, they were of different sizes, and it took me 6 months to go get those shoes, because I was in Pakistan and one of my friends from America had to bring those in. So when I received the shoes, the sizes were different. So what I did was, I after 6 months almost, I wrote them an email and I requested them to change the shoe size, and I realized that. Even after 6 months, they were happy to refund the amount, as well as they were happy to take back the shoes and deliver the new shoe size. So this is an example of a good experience I had. I think there are different brands who have particular duration during which you can make those exchanges, and they are not available always. So it was a very good experience for me. Similarly, there are few bad experiences as well when you work with different brands. So for example, if you have come across a scenario where recently you bought something from a brand on sale, and they refuse to change sizes as well. So that's a bad customer experience, because size change will not impact the organization as much as the customer. These are some of the examples of good and bad experiences that I had recently during my purchases. I'll show you a video as well of good and bad, of how the customer experience has transformed over times, and how a good or bad customer experience can impact the customer as well. Okay, guys. So anyone who would like to share any experience they recently had, where they felt that the customer experience has transformed over time?
Anjum or any other person? जी माजिद, हेलो। जी मेरे ख्याल में लोग इंटरेस्टेड नहीं है, चलेंगे। मैं एक और सिनेरियो जो है वो पुट करना चाह रहा हूँ। अभी तक आपने जो बातें की हैं, मेरी आवाज आप ऑडिएबल हूँ मैं? जी जी माजिद, और जी, मैं एक सिनेरियो आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ कि ये आपने जैसे एग्जांपल्स दी हैं, ये जो रिटेल की आइटम्स हैं उनके ऊपर तो बिल्कुल ये फिट इन हो रही हैं कि ईमेल्स के प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर रिस्पॉन्स होना चाहिए। मैं एक डिफरेंट सिनेरियो डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि फर्ज कर लें कि हम रिटेल बिजनेस में नहीं है, हम सम कॉर्पोरेट बिजनेस में अगर हैं, हम फर्ज कर लें कि है हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स में डील करते हैं, जहाँ पे फर्ज कर लें गवर्नमेंट के साथ आप डील कर रहे हैं। तो ठीक है। वहां पे एक्सपीरियंस मैनेजमेंट जो है वो उसके ऊपर, जैसे आपने कहा कि वर्ड ऑफ माउथ जो है वो आजकल इम्पैक्ट कर रहा है। फर्ज कर ले जी हम जी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो तो एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन उसकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ होती है। तो वहां ठीक है। पे जो दूसरे लोग हैं वो तो आपके साथ इंटरेक्ट नहीं करते। कोई दूसरा कस्टमर आके या उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो है वो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके फीडबैक तो नहीं देंगे। तो ठीक है। ऐसी सूरत में उस एक्सपीरियंस को कैसे मैनेज किया जाए? अच्छा देखिए, मैं जो भी क्लियर कर एक्सपीरियंस, पाया हूँ अपना सवाल? अच्छा आप बिजनेस टू बिजनेस की बात करें, बी टू बी डोमेन के अंदर? जी, बी टू बी डोमेन में फर्ज कर ले हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं थ्रू अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑफ बिजनेस, जिसमें रिटेल बिजनेस नहीं है। अब ठीक है। अगर वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका तो कोई बंदा आके डिजिटली जो है वो फेसबुक पे या इंस्टा पे आके कमेंट नहीं बिल्कुल देगा नहीं कि करता। हमने इस ऑर्गेनाइजेशन से काम किया। तो अब उस सूरत में जो दूसरे कस्टमर्स ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, उनको कैसे प्रोवोक किया जा सकता है कमेंट्स के लिए? अच्छा, माजिद, डिफरेंट मेथोडोलॉजीज यूज होती हैं टू माय कस्टमर एक्सपीरियंस। सो एक तो जी। देखिए जनरल पब्लिक के लिए हम करते हैं, एक हम बिजनेस टू बिजनेस के लिए भी करते हैं। सो बिजनेस टू बिजनेस के केस में जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर रहे होते हैं, सो आपके पास हम्म। कुछ पीओसीज इन कॉन्टेक्ट जरूर होते हैं। जी। ठीक है। सो उन पीओसी से आप रेगुलर फीडबैक ले सकते हैं। सो जैसे हम अभी भी मर्स के अंदर एक बिजनेस टू बिजनेस डोमेन के अंदर काम करते हैं, सो देयर इज अ एनपीएस एंड सीसैट सर्वर दैट वी रेगुलरली रन विद आवर कस्टमर्स। इसी तरह टेलीनॉर के अंदर भी जब हम बिजनेस टू बिजनेस डोमेन के अंदर काम करते थे, तो जो पीओसीज हमारे साथ कॉन्टेक्ट में होते हैं इन दैट पर्टिकुलर डोमेन, उन पीओसी से हम रेगुलर फीडबैक लेते हैं। सेकेंडली, टू मेजर देयर एक्सपीरियंस, बहुत सी डिफरेंट इंटरैक्टिव एक्टिविटीज जो हैं वो हम कर रहे होते हैं। सो वन ऑफ दोज इंटरैक्टिव एक्टिविटीज इज कि हम उनको ऑफिस में बुला लेते थे फॉर डिफरेंट डिस्कशंस, या फिर हम अपनी लाइन के साथ या पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप मैनेजमेंट है उनके साथ कोई ना कोई एक्टिविटी प्लान कर लेते थे। ठीक है। सो देयर कैन बी डिफरेंट वे टू ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज विद दोज कस्टमर्स एज वेल एंड टू मेजर देयर एक्सपीरियंस एज वेल। सो जब आप एक्सपीरियंस डिलीवर कर देते हैं, सो आप पोस्ट एक्सपीरियंस सर्विस कर सकते हैं। इसी तरह जब आप उनके साथ इनफॉर्मल डिस्कशंस कर सकते हैं और मीट ओवर्स कर सकते हैं टू इम्प्रूव देयर एक्सपीरियंस एज वेल। इसी तरह बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो बर्थडे पे विशेस भेजती हैं, या उनको डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर कार्ड्स एंड डिफरेंट प्रमोशनल चीजें भेजते रहते हैं टू स्टे इन टच विद दोज कस्टमर्स। सो देयर कैन बी मल्टीपल methods in which you can coordinate और measure their experience. सो उसमें आप सर्वेस कर लें, या आप रेगुलर मीटअप्स रख लें, या आप उनको उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज के ऊपर, या उस ऑर्गेनाइजेशन की एनिवर्सरी आ रही है उसके ऊपर कोई विश कर दें। सो देयर कैन बी मल्टीपल वेज इन विच यू कैन एंगेज दोज कस्टमर्स एज वेल, बिजनेस टू बिजनेस मैडम, डोमेन। ये जो चीजें आप कह रही हैं, आई अंडरस्टैंड कि ये पीआर के जो है वो सर्कल में आएंगी।
ये तो जी बिल्कुल। मैं आगे अपना जो क्वेश्चन है मैं दोबारा फ्रेज करता हूँ ठीक कि है। फर्ज कर लें कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो आप कॉरपोरेट लेवल पे बात कर रही हैं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं आप उनके साथ मीटअप कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, सारी चीजें वो ठीक है। लेकिन अगर हम एक एंड पे देखते हैं कि हमारा कस्टमर जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब ठीक है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मली आप सारी डिस्कशन करेंगे, वो सारा कुछ कहेंगे जी ठीक है, सारी चीजें फिट है। मेरा ठीक है। मकसद ये है कि उस कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो अगर हमने दूसरे कस्टमर को प्रेजेंट करना है, जो जैसा कि डिजिटली रिटेल में होता है कि लोग फीडबैक देते हैं, लोग उसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन ठीक है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉब्लम ये है कि वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई भी चीज जो है वो फॉर्मली लिख के, फर्ज कर ले मैं उसे कहूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस का एक लेटर लिख के मुझे दे दे, तो वो कहेगा नहीं जी मैं तो नहीं लिख के दे सकता, आपके साथ अच्छा। जो हमारी कमिटमेंट थी वो पूरी हो गई है, जिस तरह से जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया। अब उसमें कस्टमर फीडबैक जो है वो प्राइवेट कस्टमर जो है वो तो बिल्कुल देगा, रिटेल वाला कस्टमर भी दे देगा, सोशली भी लिख देगा। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो बाउंड है, वो कोई चीज आपको लिख के, कोई मैसेज आपके लिए रिकॉर्ड नहीं करा सकते, आपके डिजिटली किसी प्लेटफॉर्म पे आके कोई कमेंट नहीं कर सकते। क्यों? उनकी डिफरेंट ऑब्लिगेट जो बाउंडेशंस होती हैं। उस सूरत में इसको कैसे मैनेज किया जाए? डू यू हैव एनी वे फॉरवर्ड फॉर दैट? आप मुझे ये बताएं कि एज इंडिविजुअल्स वो आपको कोई टेस्टिमोनियल्स वगैरह भी नहीं देते हैं? क्योंकि इन एनी केस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आप टेस्टिमोनियल्स तो ले सकते हैं ना, कि हाउ वाज देयर एक्सपीरियंस विद यू ड्यूरिंग द जर्नी, जो भी आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, किया या वो किया। वो लिख के नहीं देते ना, वो लिख के नहीं ठीक देते। है। वो कहते हैं जी इसकी कोई चूंकि कॉन्ट्रेक्चुअली ऑब्लिगेशन नहीं है, आप हमारे और आपके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें कोई चीज ऐसी रिटर्न नहीं थी कि हम आपको एक्सपीरियंस का फीडबैक दें। तो अब ठीक है। मैं तो कोई चीज, कोई भी जो भी उस वक्त जो है वो चेयर पे बैठा है वो कहता है जी मैं कोई चीज लिख के अपने आप को जो है वो क्यों बाउंड करूं। तो ठीक है। तो उस सूरत में उस कस्टमर का भले वो 100% सेटिस्फेक्शन लेवल हो उसका, हम दूसरे कस्टमर को जाके, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को जाके उसका जो गुड एक्सपीरियंस, हैप्पी एक्सपीरियंस है वो प्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक। अच्छा माजिद, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो कि आपको फिर देखिए, अगर इफ यू आर डीलिंग विद मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस और हम्म। आपके पास बाकी लोगों का पॉजिटिव फीडबैक है, सो व्हाई वुड यू ओनली लाइक द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पॉजिटिव फीडबैक? एक तो आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट। सेकेंडली, एक्चुअली हमने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया हुआ है प्रीवियसली, सो आई नेवर हम्म। हैड सिनेरियो वेयर जो पीओसी है वो कोई फीडबैक ही देने से इनकार करते। सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि एक तो ये कि अगर आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं, यू कैन गेट अ नंबर ऑफ टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम अदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाई वुड यू लाइक अ टेस्टिमोनियल फ्रॉम अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन? सेकेंडली, नो, बिकॉज इफ, या यस ओके, प्लीज प्लीज, सॉरी। नहीं नहीं, आप बताएं बताएं प्लीज। जी, मैं उसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे फर्ज कर ले आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ही अगर बिजनेस करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कि मैं ऑयल एंड गैस ठीक है। इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है, हम ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स करते हैं बिगर स्केल के। तो उसमें जो क्लाइंट है आपके वो गवर्नमेंट के ही होते हैं, जैसे आपके OGDCL। आई थिंक वी लॉस्ट माजिद। Okay, so as we lost Majid,
So we can continue with the rest of the areas. I hope they join back soon. Wajahat. जी अस्सलाम वालेकुम. I can hear you fine. I can hear you fine. Okay. Thank you जी so जी much. जी. Kindly do participate in the discussion, because without proper participation, the presentation just seems as a one-way communication. So I would like. I will. I've just joined the conversation, and I was trying to pick up the momentum. So this is one topic, customer experience, which has been very close to my heart. And this is something I've been eating, living, and breathing for a decade and a half, actually. So I'm a big proponent of customer experience. वो पहले किसी वक्त में हम customer services की बात करते थे, तो वो किस तरह से transform हुआ और उसके dynamics भी customer experience में. So that is very interesting actually. So मैं इस वक्त मेरी कोशिश ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकूं. So इसलिए मैं बिल्कुल खामोशी से. But I have no qualm in asking whatever questions I'll have, inshallah ta'ala. Okay, sure. Thank you so much. Customer experience management is an area जिससे relevant बहुत सी different terminologies use हो रही हैं. So customer centricity is one, and customer experience management is used, and user experience or user interface is another terminologies that is used. So what's the difference between these terminologies? ये एक बहुत frequently asked question है. So actually, customer centricity is a much broader domain. So when an organization is focused towards its customers in a way that all their processes, products, and everything revolves around the customer, then it is called a customer-centric organization. So even your vision, your mission, all revolve around the customer. And that's a very bigger domain if we look at customer centricity from an organization perspective. At the same time, customer experience management is a different area, which is a sub part of customer centricity. So if the complete organization is focused on customer, the area of customer experience management is a sub part of it, and that will focus around the interactions that customer have with the organization. So all interacting channels. अब होता क्या है कि एक कस्टमर फेसिंग इंटरैक्टिंग चैनल्स हैं जो कस्टमर के साथ ऑर्गेनाइजेशन का एक बॉन्ड बनता है, और कस्टमर सेंट्रिसिटी के अंदर बहुत से ऐसे एरियाज भी होते हैं जहाँ पे एट द बैक एंड ऑर्गेनाइजेशन ऐसी डिसीजंस ले रही होती है जो डायरेक्टली कस्टमर को इम्पैक्ट नहीं कर रहे होते और कस्टमर के बैक ऑफ द माइंड भी नहीं होते, लेकिन वो उसका एक्सपीरियंस बहुत बेहतर कर देते हैं. इसी तरह यूजर एक्सपीरियंस कस्टमर का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ एक्सपीरियंस है. तो अगर आपने फॉर एग्जांपल टेलको इंडस्ट्री में या किसी और इंडस्ट्री के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे एटीएम कार्ड है बैंक का, तो वो एटीएम कार्ड किस तरह यूज कर रहा है, उसका यूजेज क्या है, या एक टेलको इंडस्ट्री के अंदर कस्टमर आरबीटी यूटिलाइज कर रहा है, सो वो आरबीटी किस तरह यूटिलाइज कर रहा है, सो वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस है विच इज कॉल्ड यूएक्स. और इसी तरह यूआई जो है, जो वेब एप्लीकेशन या कंप्यूटर इंटरेक्शन है, उसका फीडबैक है. सो इट्स अ यूजर इंटरफेस दैट कस्टमर इज वर्किंग विद. सो आपने एक वेबसाइट के ऊपर जाके कोई एक्टिविटी की है, तो वो एक यूजर इंटरफेस है जिसके ऊपर कस्टमर इंटरेक्ट कर रहा है, और उस यूजर इंटरफेस का डिजाइन, उसकी नेविगेशन, उसकी कलर स्कीम, फॉन्ट साइज, ईच एंड एवरीथिंग कम्स अंडर यूआई. सो overall, customer centricity is a broader domain under which customer experience, user interface, and user experience fall. अच्छा, before moving on to क्या customer centricity के अंदर how organization design and define customer centricity, I like to share an example of customer services, good and bad, that will show you how customer services also play a role in customer experience management.
सायरा मैं सुन नहीं पा रहा हूँ वीडियो में क्या है, आप थोड़ा सा इसका वॉल्यूम अगर आप इंक्रीज कर दें प्लीज। आई डोंट नो बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ भी यही इशू है, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। मैं आपको I don't know, वॉल्यूम just- अप कर देती हूँ। आई कैन प्ले इट अगेन। Sure, शुक्रिया। Was it audible? Nope, not at all. नहीं, no. Oh, okay. So I'll just explain you an idea of what happened. So the customer went for Share the in chat so everyone can play at their own. yeah, sure. Okay, so I can do that for you. So have you guys received it? Not yet. Okay, great. So do you guys need 2 to 3 minutes to watch it before we can move on?
Okay, guys. So what I can do is I'll share all the videos that I had shortlisted for you separately because I think there is some voice issue here. Sure. So what we can do is we can continue with the training and you can watch the videos later. With customer centricity, we have to organize the organization around customer experience management, right? So how can we do it? So to do that, the organizations need to set a few ground rules for themselves in order to get into a customer-centric transformation. For that, like every organization which operates within a particular domain, and they need their vision, mission to continue working and organizing all resources around a particular area. In customer centricity as well, we need a vision. So बहुत सी organizations जो अभी operate कर रही हैं, they are all operating around a particular CX vision. सो फॉर एग्जाम्पल अभी हम रिसेंट जो एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा कोट करते हैं विद इन अ CX डोमेन, उसके अंदर Amazon, Zappos और बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं which are very customer centric organizations. So all those organizations have a vision statement around which they organize all their organizational resources to achieve that particular goal. So customer centric vision जो है किसी भी organization का that serves the purpose जिसके अंदर दे deliver what they want to the customer. So for example, अगर आप Amazon का vision देखें तो उनका vision है to be the earth's most customer centric company, to build a place where people can come to find and discover anything they might want to buy online. So Amazon का vision बहुत broad है, इसीलिए अभी Amazon जो expand कर रहा है, they are expanding into every possible area जहाँ पे कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट होती है. सो वेदर इट्स शूज, वेदर इट्स क्लोथिंग, वेदर इट्स ग्रोसरी, हर एरिया के अंदर Amazon जो है वो वेंचर इन कर रहा है. इसकी वजह ये कि दे हैव अ विजन व्हिच इज मच ब्रॉडर देन जस्ट जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया से बहुत बड़ा है. So in e-commerce, they are trying to expand everywhere they can possibly. इसी तरह जो अगर आप बाकी customer centric organizations हैं उनको देखें तो they all have a vision around which they organize their resources around. So उस vision के इर्द गिर्द आपके लोगों को clarity होनी चाहिए that what are the vision that you want to serve to the customer. इसी तरह आपकी products and services वैसे designed होनी चाहिए, आपकी pricing वैसे होनी चाहिए, आपकी marketing वैसे होनी चाहिए. So every organization that wants to be a customer centric organization, they should have a customer centric vision and they should align their resources along that. Similarly, there are a few areas that the organization needs to work on, not just around the customer services. So आपने understand करना है कि आपका customer है क्या. So if you define a vision कि मैंने ये serve करना है customer को and this is what as a company I want to be known for, so आपको उस vision को materialize करने के लिए जो पहला step है वो ये है कि आपको अपने customer को समझने की जरूरत है. And in today's world आपकी customer segmentation बहुत जरूरी है. So आपने around different areas जैसे demographics हैं, then your customers needs and wants कि वो क्या चाह रहा है, आप अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफाइन करते हैं कस्टमर के सेगमेंट्स जिनको आप सर्विस करना चाह रहे हैं. सो इफ यू हैव अ वेरी ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन और आपके मिलियंस ऑफ कस्टमर्स होते हैं, जैसे कस्टमर आप टेलको इंडस्ट्री देख लें, सो उसके अंदर यू डिफाइन द कस्टमर यू आर सर्विसिंग. सो उसके अंदर बहुत से कस्टमर्स की डिफरेंट needs and wants हो सकती हैं. In shipping industry, we have defined those customers as एक segment है जिसको हम कहते हैं ambition and another segment is expertise. So ये segments किस तरह बने हैं? So segments इस तरह बने हैं कि आपके customer की spending power कितनी है, उसकी organization से requirement क्या है, क्या लेना चाह रहे हैं वो, उसकी प्राइसिंग रिक्वायरमेंट क्या है, फ्यूचर में ये कस्टमर कितना प्रोडक्टिव हो सकता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. सो आप सेगमेंटेशन कस्टमर की उसके अराउंड करते हैं एंड वंस यू सेगमेंट द कस्टमर्स अराउंड दोस एरियाज, सो आप उस हर सेगमेंट को उसकी नीड के मुताबिक प्रोडक्ट देते हैं.
So when you are working on being a customer centric organization, so आपकी segmentation is very important, and then each segment has to be provided with the things that they need. और इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा recent ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके अंदर आपकी इमोशनल सेगमेंटेशन भी होती है. सो कस्टमर की इमोशनल नीड्स को भी आप सेगमेंट करते हो कि व्हाट डू दे फील अबाउट द ब्रांड. सो जैसे एक ट्रस्टवर्दीनेस इज वन ऑफ द एरिया इमोशनली जिससे आप कस्टमर को कनेक्ट कर सकते हैं. सो ओवर चार्जिंग, हमने रिसेंट फिनोमिनन देखा था कि बहुत ज्यादा डेली चार्जेस लग रहे थे टेलको सेक्टर के अंदर. सो कस्टमर जो है जब आप आई वाज पार्ट ऑफ अ रिसर्च जिसके अंदर हमने ये एनालाइज किया कि कस्टमर्स डोंट कनेक्ट विद द फैक्ट कि हम उनको डेली जो है वो चार्ज करते हैं और उसकी कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाती है. सो आफ्टर एवरी 5 और 6 ईयर जब कस्टमर अपना बैलेंस देखता है तो उसकी कुछ अमाउंट डिडक्ट हुई हुई होती है. सो दिस इज द इमोशनल कनेक्ट दैट दे फील लॉस्ट व्हेन दे वर्क विद द टेलको इंडस्ट्री. सो trustworthiness was one of the emotional factor that was very important. इसी तरह different industries के अंदर जब आप research करते हैं and you segment your customers, so आप उनकी emotional needs पे भी segmentation करते हैं, and on those emotional needs आपको realize होता है कि आपने customer के साथ किस तरह connect करना है, and the emotional connection is always deeper than the normal need and want connection that we have with the customer. एक चीज आप लोगों ने और ऑब्जर्व की होगी कि जब आप कोई भी चीज ऑनलाइन बाय करने जाते हैं और आपको कोई चीज पसंद आती है तो वो बार बार पॉपअप होती है आपके सामने. हैव यू एवर फेस्ड दैट एनी सच सिनेरियो व्हाइल बाइंग ऑनलाइन? वजाहत? जी जी जी, सायरा प्लीज कंटिन्यू कीजिए, मैं साथ हूँ आपके. मैं थोड़ी देर के लिए मुझे बीच में से पॉज मैंने किया था. अच्छा, नो प्रॉब्लम. सो आई वाज Come back. डिस्कसिंग कि हैव यू एवर फेस्ड द सिनेरियो जहाँ पे आपने कोई ऑनलाइन कोई वेबसाइट खोली और जाके कोई चीज देखी हो एंड देन आफ्टर सम टाइम यू फेल्ट कि वो बार-बार पॉपअप हो रही है जी जी, आपकी? absolutely. So many a times I have to face this. So what brands are doing recently is that they connect with what you really like and want, and then they keep on popping up that. और उसको पॉप अप करने का मतलब ये होता है कि आपको इमोशनली वो इतना ज्यादा इफेक्ट कर रही होती है कि at some point in time आप you think of buying it. So nowadays the segmentation and the customer connect is more often an emotional connect than need and want connect as well. So you also need to learn what the customer feels about the organization, and then you align all your processes and technologies around it. और फिर उसी What में happens is, हाँ जी जी, जी, sorry to cut you, but what happens is, so if I'm in the middle of something, कोई आर्टिकल है फॉर एग्जांपल जैसे हम रीड कर रहे हैं और वो एक कंटिन्यूटी, एक मोमेंटम उसका बना हुआ है, और उसके दरमियान में जब वो बार बार पॉप अप कर रहा है, या फॉर एग्जांपल एक यूट्यूब की वीडियो है और उसके दरमियान में वो उस तरीके से एड्स को बार बार लेकर आ रहा है, तो वो ठीक है, वो एड्स शायद मेरे लिए वो मेरा इंटरेस्ट है उन एड्स में, प्रोबेबली इसीलिए मुझे वो इन द मिडल ऑफ द वीडियो या द मिडल ऑफ द आर्टिकल बार बार उसको पॉप अप कर रहा है. लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पर जिस मकसद के लिए मैं वहां पर हूँ वो कुछ और मकसद है, और फ्रेम ऑफ माइंड बिल्कुल मेरा चूंकि मुख्तलिफ है. मैं आई एम इनटू रीडिंग एन आर्टिकल और समथिंग, उसके दरमियान में वो अगर वो एक पॉप अप, भले वो जितना भी इंटरेस्टिंग होगा, उस वक्त के लिए, उस पॉइंट इन टाइम के लिए मेरे लिए मुझे बॉदर करता है. और सो ये मेरी फीलिंग है. हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है. सो हो क्या रहा है कि brands are trying to hook the customers. So how do they try to hook the customers? They try to hook the customers by popping up these things again and again. So अगर आप देखें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो which will eventually buy that particular product. So what you do is you try to hit the customer emotionally
to get those purchases. So इसलिए जब हम customer centricity की बात करते हैं और segmentation की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो recent phenomenon है, उसके अंदर emotional segmentation जो है वो बहुत critical हो गई है, and brands try to connect with customers emotionally as well. So उसमें marketing और everything is being aligned accordingly. So customer centricity के अंदर once you want to implement that in a particular organization, so आप जो vision बनाते हैं, तो उस vision के बाद segmentation करके उस vision को realize करने की कोशिश करते हैं, and that goes for all customer centric organizations. And you try to find out the emotional connect that customer has with you right now, and then you try to build on that emotional connect ताकि आपका एक long term relationship customer के साथ बन जाए with the passage of time. So this is how it works. इसके अंदर जो important चीज है वो ये है कि there are a few methodologies that are used to build that connect, और उसके अंदर एक methodology जो है, जो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगी, वो human centered design की methodology भी है. So आप कस्टमर के साथ कस्टमर की जर्नी जो है वो प्री-एम्प्ट करते हैं कि वो क्या जर्नी आपके साथ लेगा, एंड यू ट्राई टू डिजाइन दैट जर्नी, एंड देन यू कलेक्ट फीडबैक अक्रॉस दैट जर्नी ताकि आप उसको इम्प्रूव कर सकें. सो देयर आर डिफरेंट मेजर्स जो CX के अंदर अभी यूज हो रही हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉलोइंग दोज मेजर्स टू सी हाउ एंगेज द कस्टमर्स आर, या कस्टमर्स को कोई इशू तो नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एंड दे कैन फिक्स इट. सो उसके अंदर एक measure which is very rampant these days, उसके अंदर NPS है, जो कि नेट प्रोमोटर स्कोर है. सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर जो है वो कितना लॉयल है विद द ब्रांड by asking him कि कितने chances हैं that the customer will recommend your brand to their friends and family, और उसको आप on a scale of 1 to 10 measure करते हैं. So 9 and 10 being the promoters, 1 to 6 promoter minus detractors is your net promoter score. What does that mean? इसका मतलब ये है कि आपके जितने लोग एक नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ आपके बारे में फैलाएंगे, क्या उससे ज्यादा लोग हैं जो एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आपके लिए कैरी आउट करेंगे टू द जनरल पब्लिक. सो अगर तो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ वाले लोग ज्यादा है एज कम्पेयर टू नेगेटिव, सो एज अ नेट रिजल्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट विल एक्सेल, क्योंकि आपके बारे में ज्यादा अच्छी बातें कहने वाले लोगों का रेशो ज्यादा है. सो दिस इज अ मेजर ऑफ लॉयल्टी एज वेल एज दिस इज अ मेजर ऑफ हाउ गुड द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विंग द कस्टमर्स, और उसके ऊपर कस्टमर्स उनको प्रमोट करेंगे. इसी तरह जो दूसरा मेजर हम लेते हैं फॉर मेजरिंग कस्टमर एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द डे, दैट इज CSAT. और आजकल आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर स्टैंडर्ड चार्टर्ड में अगर कोई कॉल करे तो एट द एंड ऑफ द कॉल दे आस्क फॉर योर एक्सपीरियंस. सो हैव यू एवर हैड अ रीसेंट एक्सपीरियंस जहां पे आपने कॉल बंद की और आपसे स्कोरिंग ली गई हो? हेलो जी, मुझे बैंक के साथ जब मैं डील करता हूं तो वो ऐसे करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जो मुझे अच्छी लगी बात वो ये कि सो मैंने जैस के साथ उस जमाने में तो उसको मोबिलिंग कहा जाता था, उस वक्त मैंने उनके साथ 7 साल काम किया. सो मैं इनसाइड आउट में मोबिलिंग की जानता हूँ, उससे मैं वाकिफ हूँ. लेकिन अभी मोस्ट रिसेंटली मेरा इत्तेफाक हुआ, मैं मोबिलिंग के एक ऑफिस में गया, वहाँ मेरी कुछ मीटिंग थी. जब मैं मीटिंग से बाहर आया, so I was astonished to get a message from their chief security officer, और वो मैसेज मेरे मोबाइल फोन पर आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि जनाब आप अभी यहाँ मौजूद थे, आप बताइए कि द मोमेंट यू एंटर्ड द बिल्डिंग एंड टिल द टाइम यू स्टेड देयर एंड देन यू केम आउट, इस सारे प्रोसेस में, इस सारे टाइम पीरियड में कोई ऐसे मामला जहाँ किसी गार्ड ने आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया हो या आपको कोई हैसल हुई हो while entering the office or while coming out of it. So वो मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी कि उनका वो मैसेज फॉरवर्ड किया और साथ में उनका नंबर मौजूद था कि अगर मेरे कोई कंसर्न्स है, रिजर्वेशंस है, तो मैं आई कैन वॉइस देम राइट अवे टू द हाईएस्ट ऑफिस, टू द मोस्ट कंसर्न्ड पर्सन. So that was quite a good experience, man. Yeah, that's really nice.
actually. So the organizations actually use different measures to see कि जो customer है वो was they satisfied, are they loyal to the brand, or did they have an easy or user friendly experience across different channels that they offer. So एक NPS is one measure. NPS के अंदर भी जो है वो different areas हैं. सो उसके अंदर एक एम्प्लॉय एनपीएस भी है, क्योंकि व्हेन एवर यू टॉक अबाउट कस्टमर सेंट्रिसिटी तो उसके अंदर आपके एम्प्लॉय सेंट्रिक होना ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा जरूरी है. बिकॉज अगर आपने एक अच्छा एक्सपीरियंस कस्टमर को देना है तो उससे पहले आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए. सो एम्प्लॉय एनपीएस इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल एनपीएस स्ट्रैटेजी. उसके अंदर टॉप डाउन और बॉटम अप एनपीएस भी होता है. सो ये वो मेजर्स हैं जो वंस कस्टमर या एम्प्लॉय आपके साथ काम कर रहा है, सो आप उससे ये एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं ताकि आपको पल्स पता चलती रहे कि ऑर्गेनाइजेशन सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही. इसी तरह सीसेट है. सो सीसेट इज थोड़ी सी लीनियंट मेजरमेंट है एज कंपेयर टू एनपीएस, लेकिन हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजर करते हैं टू सी कि कस्टमर को उसका रेजोल्यूशन मिला नहीं मिला, वो उससे सेटिस्फाइड था नहीं था. सो देयर कैन बी डिफरेंट प्रोबिंग क्वेश्चंस आप सीसेट के बाद पूछ सकते हैं कस्टमर से टू सी कि उसको उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था या क्या चीज हेल्प आउट की, क्या चीज हेल्प आउट नहीं की. लेकिन ओवरऑल सीसेट इज यूज्ड टू सी कि कस्टमर का एंड टू एंड एक्सपीरियंस या सेटिस्फैक्शन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ या पर्टिकुलर चैनल के साथ कैसी थी. सो कॉल सेंटर पे जब कस्टमर कॉल करता है तो ये एक बहुत कॉमन चीज हो गई है कि उसके बाद एक जो है सेटिस्फैक्शन सर्वे कस्टमर को पुश किया जाता है. इसी तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज करने के ऊपर भी कंपनीज जो है वो डिफरेंट सेटिस्फैक्शन सर्विस करती हैं टू सी कि वो प्रोडक्ट यूजेज जो था वो कस्टमर के लिए कन्वीनियंट था या नहीं था. अच्छा, एक जो मैया बहुत ज्यादा अब कॉमन हो गई है वो एफर्ट स्कोर की है. उसकी वजह ये है कि कस्टमर्स अब बहुत ज्यादा डिजिटल चैनल्स यूज करना शुरू हो गए हैं. सो पोस्ट कोविड आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा नोट किया होगा कि एप्स का यूजेज और वेबसाइट का यूजेज बहुत ज्यादा बढ़ गया. सो ई कॉमर्स के केस में भी कस्टमर्स यूज एप्स एंड वेबसाइट अलोंग, और इसके अलावा भी अब इनका यूजेज जो है वो पहले से बहुत ज्यादा एनहांस हो गया. सो व्हाई डू वी मेजर कस्टमर एफर्ट स्कोर? सो कस्टमर एफर्ट स्कोर हम इसलिए मेजर करते हैं कि कस्टमर अगर किसी चैनल के ऊपर आया है एंड फॉर एग्जाम्पल परचेज के लिए आया, सो वॉज ही एबल टू कंप्लीट दैट एक्टिविटी. क्योंकि अगर एक कस्टमर आया और आपने परचेज का प्रोसेस इतना स्टिंजेंट किया हुआ है, टफ किया हुआ है कि वो दरमियान में छोड़ के चला जाता है, तो आपका एक्सपीरियंस भी खराब हुआ है एंड देन यू लॉस्ट योर सेल्स एज वेल. सो ये डिफरेंट मेजर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं अभी टू सी कि उसके कस्टमर का एक्सपीरियंस किस तरह का है. सो अगर वो डिससेटिस्फाइड है कस्टमर, सो आप देखते हैं कि टॉप रीजंस क्या हैं फॉर डिससेटिस्फैक्शन. सो फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर ने लिखा है कि मैं डिससेटिस्फाइड हूँ और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्रिटिकल एरिया था वो ये था कि आपकी कॉल सेंटर पे कॉल ही नहीं मिलती. सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी नीड टू फिक्स दैट एरिया. इसी तरह कई जगहों पे डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं. सो आपका एजेंट फ्रेंडली नहीं था या आपका एजेंट जो है उसने रूडली बात किया. सो दीस आर द वेज इन विच ऑर्गेनाइजेशंस मेजर कस्टमर एक्सपीरियंस एंड देन उस कस्टमर एक्सपीरियंस के रीजंस के ऊपर आप फर्दर एक्शनेबिलिटी ड्राइव करते हैं कि आपने क्या क्या इंप्रूवमेंट्स लानी है. सो दैट कैन बी ईदर एजेंट ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, या हो सकता है कि आपका कोई प्रोसेस है जो सोल्यूशंस नहीं दे रहा कस्टमर को एंड दे वांट यू टू फिक्स दैट प्रोसेस, या आपकी कोई प्रोडक्ट है जो यूज करने में डिफिकल्टी आ रही है. सो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस जो कि पॉपअप होती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्विस. और आप फिर उन रीजंस में से आइडेंटिफाई करते हैं कि टॉप रीजंस फॉर डिससेटिस्फैक्शन क्या है और उनको फिक्स करते हैं. सो there is a term that is used जिसको कहते हैं कि loop closure. So what is actually loop closure? Loop closure is a complete journey जिसके अंदर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका इशू है क्या कस्टमर का जिसपे वो डिससेटिस्फाइड है, आप उसकी रूट कॉज निकालते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल कस्टमर कह रहा है कि मैंने एक प्रोडक्ट परचेज की थी और उस प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद 6 दिन बाद 7 दिन बाद मैं उस प्रोडक्ट को यूज ही नहीं कर पा रहा, और मैं जब भी जाता हूँ या डायल करता हूँ नंबर, सो मुझे बैलेंस ऑफ का मैसेज आ जाता है, या मुझे मैसेज आ जाता है कि यू आर नॉट सब्सक्राइब टू द सर्विस. अब वंस यू गेट दैट इनपुट फ्रॉम द कस्टमर, सो
ऑर्गेनाइजेशन का अगला स्टेप ये होता है टू आइडेंटिफाई कि कस्टमर को ये मैसेज क्यों आ रहा. So maybe there is a technical glitch somewhere around the use of that service कि customer को वो message जा रहा होता है. So आप वो technical glitch identify करते हैं, you fix that technical glitch and then you inform the customer कि आपने जो issue raise किया था उसके around ये technical issue था, we have fixed it and now you can try और वो issue fix हो चुका होगा. So with these satisfaction surveys and effort service, what you do is that you actually identify the root cause of the issue और आप customer journey के अंदर उस root cause को fix करने की कोशिश करते हैं. और उस root cause को fix करके then you inform the customer ताकि customer को आइंदा अगर इस तरह का कोई मसला है तो he can contact you और customer का issue resolution आपको confirm हो जाए कि हो चुकी है so that you close that loop. So these satisfaction measures actually eventually lead to the changes that lead to customer satisfaction. आप लोगों के ख्याल में क्या return on investment होगा customer experience का? If you deliver a good experience versus if you deliver a bad experience. हेलो सायरा, आप नंबर पूछ रही हैं, आप चाहती हैं कि कोई डेफिनेट नंबर की सूरत में बताया जाए? नहीं मैं नंबर नहीं चाह रही, लेकिन मैं आपसे वैसे पूछूं कि आपके ख्याल में अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा एक्सपीरियंस डिलीवर करी और एक ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा एक्सपीरियंस डिलीवर नहीं करी, सो व्हाट कैन बी द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स एट द एंड ऑफ द डे, जो आपको लगता है कि क्या जो है द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज डिलीवरिंग अ गुड एक्सपीरियंस वर्सेस अ बैड एक्सपीरियंस लूज कर रही होती है एट द एंड ऑफ द डे? मेरा ख्याल है जो आपकी कस्टमर रिटेंशन है वो बहुत हाई होती है. सो अगर आप खास तौर पर ऐसी आपका बिजनेस मॉडल फॉर एग्जांपल स्टिकीनेस इंजन ऑफ ग्रोथ को यूज कर रहा है, ठीक है, सो ऑब्वियसली उसकी जो रेट ऑफ रिटेंशन है उसके ऊपर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है. फॉर एग्जांपल फेसबुक, सो फेसबुक यूजेस स्टिकी ग्रोथ ऑफ इंजन कि उसमें कस्टमर का एक दफा आकर और वापस चले जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसका रिटेन रहना, उसका स्टिक कर जाना उस सर्विस के साथ, वो इंपॉर्टेंट है. मेरा ख्याल है कि डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट स्टिकीनेस के साथ है, रेट ऑफ रिटेंशन के साथ है, कस्टमर लॉयल्टी के साथ है, I'd say. Yes. So बिल्कुल वजाहत. So let's look at the areas जिनके ऊपर ये इम्पैक्ट कर रहा होता है. So इसी तरह there is okay, so there is a decrease in cost of servicing. Why do I say that there is a decrease in cost of servicing? Because जब आप प्रोएक्टिवली कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं और उसके अंदर मेक श्योर करते हैं कि कस्टमर एक्सपीरियंस को कंसिडर किया जाए और देखा जाए कि कैन कस्टमर इजीली यूज दैट प्रोडक्ट, तो उसमें जो चांसेस ऑफ कंप्लेंट हैं वो बहुत कम हो जाते हैं. सो if the customer calls at a call center और आप उसको सर्विस कर रहे हैं कॉल सेंटर के ऊपर, तो आपकी जो कॉल्स रिसीव होंगी कॉल सेंटर पे दैट विल रिड्यूस, बिकॉज आपने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट ऐसी बना के कस्टमर को दी है जो कि यूजर फ्रेंडली थी, जिसके अंदर कस्टमर को सेल्फ सर्विस करने में या यूज करने में आसानी थी. सो आपकी कॉल्स जब कॉल सेंटर के ऊपर कम होंगी तो आपकी कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग कम हो जाएगी. सिमिलरली जब आप कॉल सेंटर के ऊपर कॉल करते हैं एंड यू मेजर सेटिस्फैक्शन और आपको पता होता है कि कस्टमर को कौन कौन से प्रॉब्लमैटिक एरियाज हैं जहां पे मसला आ रहा है, सो आप उस बेसिस के ऊपर भी जो फिक्सेशंस करते हैं उसमें कस्टमर की कॉल बैक कम हो जाती है. सो मैंने एक इशू के लिए कॉल की, मुझे फर्स्ट ही
टाइम पे रेजोल्यूशन मिल गया, सो आई विल नॉट हैव टू कॉल बैक अगेन एंड अगेन टू गेट द इशू रिजॉल्व। इसकी एक एग्जांपल मैं देती हूँ। अब बहुत ज्यादा टेल्को के अंदर होता है कि आपकी जो है कुछ साइट डाउन हो जाती है फॉर एग्जाम्पल। सो आपकी मल्टीपल साइट्स डाउन हुई हैं कराची के अंदर, या आपको पता है कि आपने फ्रॉम 3 PM to 5 PM साइट डाउन करनी है, ठीक है। सो अगर आप कस्टमर को डाउन करने से पहले एक मैसेज ड्रॉप कर देते हैं कि फ्रॉम 3 PM to 5 PM दिस साइट विल नॉट बी अप, और आपको हो सकता है कि कॉल मिलाने में डिफिकल्टी हो। सो अगर आप ये प्रोएक्टिवली करते हैं तो व्हाट विल हैपन एट द एंड ऑफ डेज कि आपके जो कस्टमर्स की कॉल नहीं मिल रही होती और वो कॉल सेंटर के ऊपर बहुत ज्यादा कॉल्स करके आपसे कंप्लेंट करते हैं, वो कॉल्स रिड्यूस हो जाएंगी। सो देयर आर अ फ्यू प्रोएक्टिव मेजर्स जो आप कस्टमर एक्सपीरियंस के अंदर ले सकते हैं, जो आपकी कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग को कम कर सकता है। इसी तरह जो आपका चर्न है रिड्यूस हो जाता है। सो आपके कस्टमर्स विच हैव गुड एक्सपीरियंस विद अ पर्टिकुलर ब्रांड, और इसीलिए जो ब्रांड्स हैं दे चार्ज कस्टमर मोर एज वेल, बिकॉज वो सर्विसेज बहुत अच्छी दे रहे होते हैं। सो उन कस्टमर्स का आपके ब्रांड को छोड़ के जाना मुश्किल हो जाता है टू होम यू सर्विस वेरी वेल। सो जहां पे आप एक्सपीरियंस मैनेजमेंट बहुत अच्छी करते हैं, आपकी चर्न रिडक्शन होती है, एंड आपकी रिपीट परचेजेस और क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग का काउंट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। सो योर रेवेन्यू इंक्रीजेस, योर चर्न रिड्यूसेस, योर रिपीट परचेज इंक्रीजेस, वर्ड ऑफ माउथ से आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है। सो नाउअडेज people spend more on experience than on marketing because आपके customers ही आपकी marketing कर रहे होते हैं। So I have mentioned a few facts around it जो कि customer experience में as an ROI आप देख सकते हैं कि impact करते हैं। So I'll share these slides with you as well, आप बाद में इसको go through भी कर सकते हैं। अच्छा, while talking about customer experience, एक और डोमेन जो कि बहुत ज्यादा रैम्पेंट है और अब एक्सपीरियंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वो है ई कॉमर्स इंडस्ट्री। अच्छा, ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर आपका यूजर एक्सपीरियंस इज इम्पैक्टिंग अ लॉट एंड इट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितना अच्छा आपका एक्सपीरियंस होगा उतनी ही आपकी ऑनलाइन सेल्स इंक्रीज होंगी। ऑनलाइन सेल्स इंक्रीज का मतलब यह है कि आप कम रिटेल फुटप्रिंट के साथ भी सर्विस कर सकते हैं। सो रिसेंट कोविड की वजह से भी बहुत ज्यादा ऑनलाइन के ऊपर फोकस इंक्रीज हुआ है, एंड इसके अलावा इंटरनेशनली ई कॉमर्स इंडस्ट्री इज बूमिंग अ लॉट, बिकॉज आपकी बहुत ज्यादा क्रॉस कंट्री ई कॉमर्स जो है वो भी बूम कर रहा है। सो आपका रिसेंट कोई एक्सपीरियंस है ऑनलाइन परचेज का, और वो कैसा एक्सपीरियंस था? जी, कोई और अगर शेयर करना चाहे या मैं कर लूं पहले? शुड आई टेक अ लीड? श्योर, बताएं। चलिए, शुक्रिया। So I have an interesting story to tell. इस हवाले से खास तौर पे जो आप बात कर रही हैं, और particularly ई कॉमर्स डोमेन में। ठीक है। So अभी कुछ अर्सा कबल हम लोग एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर की साइट पर थे। So when I say हम लोग, I mean myself and my younger brother. So हम उस साइट से गुजर रहे थे, और उसकी वो सारी जो नेविगेशन है वो पूरा चेकआउट के प्रोसेस तक लेकर जाना एंड ऑल दैट स्टफ। वो जब हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया और टिल द टाइम द ऑर्डर वाज डिलीवर्ड, सो हम, आपको पता है कि टिपिकल एंग्जाइटी भी होती है कस्टमर को कि पता नहीं जो कब आएगा ऑर्डर, कब मुझे पता चलेगा, कब मुझे कॉल आएगी कोरियर रिप्रेजेंटेटिव की, और जो ऑर्डर आएगा वो वही होगा, साइज वाइज कोई इश्यूज तो नहीं होंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम अपना वो सारा जर्नी, क्योंकि कस्टमर जर्नी मैपिंग में मेरा खुद भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं करता भी हूँ अपनी अपनी ट्रेनिंग्स में, उसको बहुत ज्यादा एडवोकेट भी करता हूँ उसके यूज को। सो हमने वो पूरा कस्टमर जर्नी मैप हमने अपने अराउंड बनाना शुरू किया। सो वहां हमें पता चला कि वो कौन से ऐसे पॉइंट्स, वो कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां हम लोग ज्यादा एंग्शियस, ज्यादा परेशान थे, ज्यादा अनहैप्पी मोमेंट्स हमारी कौन सी थी, वो हमने हाईलाइट कर लिए। सो इंटरेस्टिंगली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पुअर ऑर्डर ट्रैकिंग का आपने एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है। सो हमने ड्यूरिंग कोविड डेज वी फाउंडेड अ फुल लेंथ ई कॉमर्स एंड रिटेल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी, और उसमें हमने अपना ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, पूरा एंड टू एंड ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन किया, और हमने उसको डेवलप करके नाउ वी आर सेलिंग इट इन द मार्केट। सो हमने जब उसको ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम हमने डिजाइन किया,
So we took into account our own experience of online shopping, and particularly the areas which kept us concerned, which kept us anxious, which kept us unhappy. वो journey mapping हमारी वहाँ काम आई. तो हमने फिर actually चूंकि हम empathize कर पा रहे थे customer centricity को लेकर, फिर हमने उसको इस तरीके से डिजाइन किया कि जहां जहां हमें एंजाइटी थी, जहां जहां हमारे अनहैप्पी मोमेंट्स थे, हम ये assume कर रहे हैं कि हमारे दूसरे जो शॉपर्स हैं, ऑनलाइन शॉपर्स, उनको भी होंगे. तो हमने फिर उसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि जहां हम उन एरियाज को कवर कर सके, खास तौर पे जो जर्नी मैप के ऊपर अनहैप्पी मोमेंट्स थे. बिल्कुल. अच्छा, सो वजाहत, जब आप ई कॉमर्स की बात करते हैं ना, सो जर्नी मैपिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. उसकी वजह ये है कि अगर ड्यूरिंग द परचेज कोई ब्रोकन इवेंट्स हैं जिसके अंदर कस्टमर जो है वो ही हैज टू गिव अप परचेज, सो आपकी वो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी होती है. और इसके अलावा यह है कि पाकिस्तान के अंदर या इंटरनेशनली भी ऑनलाइन परचेजिंग इज अ बिट ट्रिकी, क्योंकि आप ना तो उन कपड़ों को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, देन आपको ये होता है कि कलर शेड जो पिक्चर आ रही है वो सही है या नहीं है, वेदर जो इन पिक्चर है वो आपको वैसे ही रिसीव होगा या नहीं होगा. तो ई कॉमर्स के अंदर जो द थिंग्स दैट हैव बिकम वेरी क्रिटिकल आर कि आपकी जो चीजें वेबसाइट के ऊपर दिखाई जा रही हैं और जिस तरह दिखाई जा रही हैं आपको डिलीवर भी उसी तरह हो. और इसमें जो अभी अगर आप पाकिस्तानी ई कॉमर्स मार्केट को थोड़ा सा स्टडी करें और देखें तो कुछ चीजें जो हैं वो बहुत कॉमन एरर्स हैं जो हर बायर को फेस करनी पड़ती हैं. सो एक जो कॉमन एरर है विच आई फेल्ट इज वेरी क्रिटिकल, देयर आर अ नंबर ऑफ देम, बट मैंने कुछ क्रिटिकल जो है वो मेंशन किए. सो आपकी जो वेबसाइट है वो आपके लैपटॉप के ऊपर एक डिफरेंट तरह ऑपरेट हो रही होती है और आपके मोबाइल के ऊपर एक डिफरेंट तरह ऑपरेट हो रही होती है. सो इफ योर वेबसाइट इज नॉट डिजाइंड इन अ वे कि आपके मोबाइल वर्जन जो है दैट should be equally easy to use as compared to your web version, क्योंकि अब आपका जो कस्टमर है he is using more of a mobile phone than that of a laptop or a web version of it. So आपकी जो मोबाइल साइट है that should be equally that should be consistent with your web page जो कि आप लैपटॉप के ऊपर यूज कर रहे हैं. एंड देन आप कि डिजाइनिंग इस तरह की होनी चाहिए कि वहां पे आपको नेविगेशन और बाकी चीजें जो है वो आसान हो जाए, जो कि अभी रिसेंटली आई हैव कम अक्रॉस अ फ्यू साइट्स जो कि बहुत डिफरेंटली ओपन होती हैं ऑन लैपटॉप एंड ऑन योर मोबाइल. सेकेंडली जो एक बहुत कॉमन मिस्टेक है ई कॉमर्स डिजाइन के अंदर वो ये है कि आपके इमेजेस जो यूज हो रहे होते हैं साइट्स के ऊपर फॉर बाइंग द क्वालिटी ऑफ दोज इमेजेस इज नॉट एज गुड एट इट शुड बी. सो आप एक प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं. सो अभी रिसेंटली आई केम अक्रॉस अ साइट जहाँ पे एक आई वांटेड टू बाय अ ड्रेस और उन्होंने बिल्कुल साइड पिक्चर जो है ना वो उसकी दी हुई थी. सो फ्रंट कंप्लीट पिक्चर भी नहीं दी हुई थी. सो आई वाज रिलक्टेंट टू बाय इट क्योंकि मैं आई वाज थिंकिंग कि अब ये सामने से पता नहीं जो बना हुआ है डिजाइन हाउ इट लुक लाइक फ्रॉम द फ्रंट. सो आपकी अगर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या इमेजेस या आपका जो डिजाइन है उसकी विजिबिलिटी और कलर्स प्रॉपर नहीं आ रहे होंगे वेबसाइट के ऊपर, सो द बायर विल बी रिलक्टेंट टू बाय दैट प्रोडक्ट एज वेल, क्योंकि वंस इट डिलीवर्स तो फिर एक ऑन वेबसाइट्स इट्स अ वेरी बिग हैसल इन पाकिस्तान टू रिटर्न, क्योंकि आप जब आपको कभी इस तरह का सिनेरियो फेस किया आप लोगों ने कि जब आप वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर करते हैं तो आप इन स्टोर जाके चेंज करना चाहें तो दे डोंट चेंज इट इन स्टोर्स, आपको वापस रिटर्न करना पड़ता है आइटम और उसके अंदर आपको उतने ही चार्जेस बेयर करने पड़ते हैं फॉर योर रिटर्न पार्सल. हैव यू गाइस एवर कम अक्रॉस अ सिनेरियो जहां पे कोई ऑनलाइन बाइंग की हो एंड देन रिटर्न करना मुश्किल हो गया? जी साइरस, स्पेशली जब ब्रांड्स अभी आज से 2-3 साल पहले तक रिलक्टेंट थे इन इम्प्लीमेंटिंग ओमनी चैनल एक्सपीरियंस, तो तब तो ये बहुत सा ज्यादा इशू था. नाउ ब्रांड्स आर यू नो they're tilting towards implementing omni channels, और मोस्टली जो बड़े ब्रांड्स हैं खासतौर पे फैशन डोमेन में, फैशन वर्टिकल में या लाइफस्टाइल अपैरल में, वो लोग चूंकि ओमनी चैनल इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सो नाउ इट इज बिकमिंग इजियर कि आप बल्कि
अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया भी है एंड फॉर एग्जांपल यू आर पासिंग बाय अ स्टोर, उसी कंपनी का एक फिजिकल एक ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर है, यू आर पासिंग बाय इट और आप कहते हैं कि चलिए मैंने ऑनलाइन तो किया था, व्हाई शुड आई वेट टू गेट इट डिलीवर्ड, सो मैं यही से स्टोर से जाकर ही मैं ले लेती हूँ। सो वो दैट इज बिकमिंग इजियर नाउ बिकॉज अब ब्रांड्स जो है वो उस तरफ सोच रहे हैं, ओमनी चैनल की तरफ, उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। अच्छा, सो वजाद, मेरा एक थोड़े अर्से पहले ही निशात का एक्सपीरियंस है। सो आई गॉट समथिंग ऑनलाइन एंड उसके बाद व्हेन आई वेंट टू द स्टोर, सो उन्होंने मुझे दोबारा ऑनलाइन पे राउट कर दिया कि गो टू ऑनलाइन चैनल एंड देन यू कैन गेट इट एक्सचेंज। फिर मैं दोबारा गई ऑनलाइन पे, आई मेल्ड देम, उन्होंने मुझे एक फॉर्म भेजा दैट आई हैड टू फिल and then I had to go back again to the shop to return the item, और उसके बाद उन्होंने मुझे once स्टोर के ऊपर वो आइटम मैंने दिया और उन्होंने उसको काउंटर चेक कर लिया कि ये दिस आइटम इज इन द गुड फॉर्म, सो देन दे एक्चुअली रिप्लेस्ड माय आइटम। सो अभी भी आई फील कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट कैन बी डन ऑन द वे ओमनी चैनल एक्सपीरियंस इज वर्किंग। सो आपकी रिटेल के ऊपर, ऑनलाइन कॉल के ऊपर, देयर आर डिफरेंट वेज इन विच यू आर बीइंग हैंडल्ड। सो ये एक चीज अभी भी है जो हमारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री को काफी फोकस करने की जरूरत है, एंड दिस इज अ कॉमन जी, मिस्टेक दैट मैनी ब्रांड्स। आई एग्री, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और वो खास तौर पे वो एंजाइटी भी सबसे ज्यादा वहां पर होती है। लेकिन द गुड न्यूज इज बिकॉज I work a lot with these e-commerce brands, खास तौर पे फैशन में और लाइफस्टाइल डोमेन में। सो अब जब से क्विक कॉमर्स का कॉन्सेप्ट आया है और कंपनीज और इवन डिलीवरी कंपनीज भी, लॉजिस्टिक कंपनीज भी क्विक कॉमर्स की तरफ जा रही हैं, सो अब ब्रांड्स को इसकी इंपॉर्टेंस का पता चल रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आज किसी शादी में, कल आने वाले कल में किसी शादी में जाना है और आज आप अगर ऑर्डर करती हैं तो आप अफोर्ड नहीं कर सकती कि आप वापस भेजें और फिर इंतजार करें 2 से 3 दिन का। तो आपको तो अगर कल शाम का फंक्शन है तो आपको 1 बजे तक डिलीवरी चाहिए। सो दैट इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ क्विक कॉमर्स कम्स इन। और अब कंपनीज उसके बारे में बहुत सीरियसली सोच रही हैं, खास तौर पे पोस्ट कोविड सिनेरियो इज कंप्लीटली डिफरेंट। अच्छा, क्विक कॉमर्स से एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है दैट नीड्स अ डिस्कशन इज कि इंटरनेशनली बहुत सी ऐसी ग्रोसरी स्टोर्स हैं ऑनलाइन जो कि 10 मिनट्स के अंदर डिलीवरी करते हैं, बट पाकिस्तान के अंदर अभी भी दैट कॉन्सेप्ट इज वे, आई थिंक इट विल टेक क्वाइट अ गुड टाइम कि हम उस कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव कर सकें, लेकिन थिंग्स आर changing and there are many different things that are being done in the industry right now, but अभी भी बहुत सी ऐसी transformations हैं जो हो सकती हैं। You guys must have come across एक मैंने आप लोगों के लिए वीडियो प्ले करनी थी, but because of the sound issues मैं अभी नहीं करी, मैं I'll share that video on chat. So you guys must have come across Amazon Go store का आपने सुना होगा। So it's a store which they have created a whole with a whole new concept कि आप अंदर जाते हैं, आपने सिर्फ Amazon app डाउनलोड की होती है अपने फोन के ऊपर, you connected with your Amazon account, और once आपने फोन सिर्फ QR कोड स्कैन करना है वहां पे, एंड वंस यू मूव इन, सो आप कुछ भी बाइंग करें, वंस यू मूव आउट तो आपके अकाउंट के अंदर टोटल बाइंग की अमाउंट आ जाती है, एंड दैट्स डिडक्टेड फ्रॉम योर क्रेडिट कार्ड या जो भी आपने जो है इनपुट किया होता है पेमेंट मेथड ऑन योर गूगल ऐप, सॉरी Amazon ऐप। सो ये जो है ना एक पूरी जर्नी है which obviously in Pakistan we will follow the international trends that are going on, but there is a lot of things that are going on in the e-commerce industry, और उसके अंदर अभी भी कुछ common mistakes हैं which we are making, but we have a long way to go. So एक जो area इसके अंदर और important है वो tracking का area. So once you purchase a particular product, सो कस्टमर को हर स्टेप के ऊपर ट्रैकिंग का पता चलना चाहिए कि मेरी प्रोडक्ट अभी कहाँ पे है, वेदर इट्स इन द वेयर हाउस से निकल गई है, इज इट इन ट्रांजिट, अगर
ट्रैकिंग कंपनी के पास है किसी, तो कहाँ कब तक मुझे मिलेगी. सो दैट कंप्लीट ट्रैकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज ई कॉमर्स के अंदर जिसकी अभी जरूरत है. और जो भी ई कॉम कंपनीज काम कर रही हैं या ब्रांड्स अपने ऑनलाइन चैनल्स ऑपरेट कर रहे हैं, they need to work on this area as well. So आप बहुत सी चीजें कस्टमर की प्रोएक्टिवली डिफरेंट चैनल्स के ऊपर हैंडल की जा सकती है, जो कि वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट तो आपका जो ओवरहेड है ऑफ कस्टमर सर्विसेज वो बहुत कम हो सकता है, एंड यू कैन गेट वेरी गुड रिजल्ट्स ऑन दैट. एक और एरिया जो मेरे ख्याल में काफी क्रिटिकल है वो ये है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट. सो आपकी अगर ई कॉम की किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर या आपके ऑनलाइन चैनल के ऊपर एक प्रोडक्ट अवेलेबल है फॉर सेल, सो आपकी इन्वेंट्री के अंदर वो प्रोडक्ट होनी चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि वंस अ कस्टमर बाइज तो आप थोड़ी देर से बाद उसको एक मैसेज ड्रॉप कर रहे हो कि वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारे इन्वेंट्री के अंदर मौजूद नहीं है. सो आई थिंक दीज आर अ फ्यू कॉमन मिस्टेक्स जो हम ई कॉमर्स के अंदर एक्सपीरियंस के लिहाज से कर रहे हैं, एंड दे कैन बी इजीली अवॉइडेड. अच्छा, so now I like to cover a very important area in customer experience management जो कि service design का है. So what guys do you think of the designs that are being displayed on the screen? So इसके अंदर design के क्या issues हैं आपके मुताबिक? Any input? So the issues are very obvious, by the way. खास तौर पे जो first two pictures हैं उसमें जहाँ पर वो there is a spoon बहुत ही weird उसकी shape है, और खास तौर पे जो ग्लास है, सो मैं जब भी ग्लास से पानी पीने जाऊंगा तो ऑब्वियसली वो आपका डिजाइन का मकसद तो ये होता है कि आप कन्वीनियंस डिलीवर करें. मुझे तो इसमें कन्वीनियंस नहीं, हाँ शायद मुझे एलिगेंस और वो स्टाइल तो मिल रहा है, लेकिन अगर कन्वीनियंस नहीं है तो व्हाट्स द पॉइंट. Yeah, very rightly said, Wajad. So, and similarly in third picture, अगर आपने ये दोनों चीजें इकट्ठी कहीं रखी हुई हैं, तो you might spray an insect killer on your food. So, ये जो है ना, this is one of the flaws of design के जो normally design thinking या design concept आता है, तो people think that the product should be very nice, ब्यूटीफुली पैक्ड, या अगर हम रिटेल डिजाइन की बात करते हैं तो द स्टोर शुड बी वेरी ब्यूटीफुली डिजाइंड और उसकी लुक एंड फील बहुत अच्छी होनी चाहिए. बट एक्चुअली द पर्पस ऑफ डिजाइन इज टू मेक थिंग्स इजी टू यूज. सो अगर एक डिजाइनर है जो कोई चीज डिजाइन कर रहा है, सो द फर्स्ट थिंग दैट ही शुड टेक केयर ऑफ इज कि ये यूजर फ्रेंडली है, जो भी कस्टमर यूज कर रहा होगा या एंड यूजर होगा, क्या उसको यूज करते में कन्वीनियंस होगी. सो दैट्स द पर्पस ऑफ डिजाइन. अच्छा, नाउ हाउ डिजाइन इम्पैक्ट्स एक्सपीरियंस एंड what are the methodologies that we are currently using in design. So design के अंदर जो सबसे important चीज है वो ये है कि convenience हो, ease to use हो. So if your design is convenient and easy to use for the customer, so उसका experience एक different tangent के ऊपर होगा, and he'll be able to deliver as a loyal customer to the organization as well. So design के अंदर अभी बहुत ज़्यादा research हुई है, and the organizations are moving towards human-centered design. So what do we mean by human-centered design actually? ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन के अंदर ये है कि जो डिजाइन शुड बी फॉर द एंड यूजर. सो फॉर एग्जांपल मैं एक कस्टमर हूँ, मैंने एक प्रोडक्ट यूज करनी है, सो द डिजाइनर शुड फोकस ऑन कि इस कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है फॉर अ पर्टिकुलर डिजाइन. सो ये नहीं होना चाहिए. सो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बहुत वेल एजुकेटेड लोग बैठे होते हैं. समटाइम्स दे डिजाइन अ प्रोडक्ट एंड सर्विस and they don't consider कि उसका end user कौन होगा. So एक लम्स का बंदा है and या एक ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड का पढ़ा हुआ बंदा है and he is designing a communication for the customers, और वो communication
कम्युनिकेशन एक्सट्रीमली हाई लेवल है, और आप जब अपने कस्टमर को देखते हैं तो कस्टमर इज मे बी, for example, I'll give a random example. So maybe a shopkeeper, और maybe जो है वो ड्राइवर है, या एक और कस्टमर है जो कि फॉर एग्जांपल एक एनी XYZ जो है वो कंपनी के अंदर काम कर रहा है. सो देयर कैन बी मल्टीपल लेवल ऑफ कस्टमर्स जिन्होंने एक्चुअली वो मैसेज पढ़ना है. ठीक है. सो अगर तो एक कस्टमर ऐसा है जो कि किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, ही इज एट अ गुड पोजीशन, ही माइट बी एबल टू डिकोड दैट मैसेज इजीली. लेकिन उसी मैसेज को अगर आप एक कस्टमर को जो कि एक ड्राइवर है, या जो है वो किसी ग्रोसरी स्टोर को चला रहा है, या किसी लो लेवल SME के अंदर टाइप राइटर है, और XYZ. सो आप अगर एक ही हाई लेवल मैसेज तमाम कस्टमर्स को भेजने की कोशिश करेंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू डिकोड दैट मैसेज. सो ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन इज कि आप अपनी डिजाइन कर रहे हैं जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द कस्टमर दैट यू आर डीलिंग विद. ठीक है. सो अगर आपने एक सो इसकी एक मैं एग्जांपल भी आपको देती हूँ. सो वी रिसेंटली रीवैम्प्ड एन आइडिया फॉर अ ब्रांड. सो उस ब्रांड के कस्टमर जो थे वो थ्रू आउट पाकिस्तान थे, और बहुत एक्सटेंसिव कस्टमर बेस थी. सो फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि 30 मिलियन कस्टमर है, और वो कस्टमर आपका पंजाब में भी है, सिंध में भी है, KPK में भी है, और आप उसको एक मैसेज अक्रॉस थ्रू IVR डिलीवर करना चाह रहे हैं. सो आपने एक आउटबाउंड IVR की, बट आप अगर वही IVR रिकॉर्डिंग इंग्लिश के अंदर करके सबको भेज देंगे, सो यू माइट नॉट बी एबल टू डिलीवर द मैसेज अक्रॉस. उसकी वजह ये है कि आपका KPK का कस्टमर ज्यादा पख्तून है, आपका सिंध का कस्टमर ज्यादा सिंधी जुबान को सुनता है और समझता है, और इसी तरह आपका पंजाब में जो कस्टमर बैठा हुआ है वो ज्यादा पंजाबी जुबान को सुनता है, समझता है. सो अगर आप एक ही मैसेज अक्रॉस और सबको करना चाहेंगे, सो व्हाट यू विल एंड अप विद इज कि आपका मैसेज अक्रॉस नहीं होगा टू फ्यू कस्टमर्स. सो हो सकता है कि कुछ कस्टमर्स उसको बहुत अच्छे से समझ लें, लेकिन बाकी कस्टमर्स नहीं समझ सकेंगे. सो उसके लिए जरूरी है कि यू रिकॉर्ड अ मैसेज इन पंजाबी, पश्तो एंड सिंधी. सो आप डिफरेंट मैसेजेस रिकॉर्ड करके डिफरेंट जगहों पे प्ले कर सकते हैं. सो और आप कस्टमर को ऑप्शन भी दे सकते हैं कि दे वांट टू लिसन टू an IVR in whatever language they want to. So उसको वो select कर लेते हैं. So the concept of human-centered design is that you have to keep humans at the center of the designing and identify their needs and wants and the category of customer that you are dealing with, and then you design your product and services accordingly. अच्छा, इसके अंदर जो तीन चीजें क्रिटिकल हैं वो ये है कि एक तो डिजायरेबिलिटी है कि कस्टमर क्या चाह रहा है. ठीक है. उसके बाद आपने ये भी देखना है कि हाउ फिजिबल इट इज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर टू दैट प्रॉमिस. ऐसा तो नहीं है कि वो कोई ऐसी चीज है जो कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप डिलीवर नहीं कर सकते, या अभी टेक्नोलॉजी उसको सपोर्ट नहीं करती. एंड देन फाइनेंशियल वायबिलिटी भी देखने की जरूरत है. सो इन तीनों के मर्जर पे एक सेंटर पॉइंट आप लेते हैं, एंड देन यू डिजाइन योर प्रोडक्ट अराउंड दैट. और वो प्रोडक्ट फिर आप जब मार्केट में डिलीवर करते हैं तो देयर इज अ हाई एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट. Do you guys ever have come across a product जिसके अंदर आपको यूज करते हुए बहुत आसानी हुई हो, या कोई वेबसाइट जिसको यूज करते हुए बहुत आसानी हुई हो, and you felt that this is really good? Are you guys there? Yeah, so there are a number of products that give that premium, ease of use. I'd say my phone, I use Realme, and I'm quite happy with that. So it's sleek, it's lightweight, it's easy to use. What else? Also, there are a certain websites when it comes to online shopping that for example, That really the helped you. website Yeah. Export Leftover, maybe, or Facebook. Facebook is quite easy to use, I'd say.
So there are number Right. of things, number of products. अच्छा, रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी ये फोकस बहुत ज्यादा बढ़ गया. सो स्वेल हो गया, एयरलिफ्ट हो गया. सो देयर आर डिफरेंट वेबसाइट्स दैट आर आल्सो डिलीवरिंग वेरी अ लॉट ऑफ कन्वीनियंस टू द कस्टमर. सो स्वेल के अंदर भी दे हैव 30-minute डिलीवरी टाइम, और आप अपनी मर्जी से टाइम चूज कर सकते हैं. सो आई थिंक यू आइडेंटिफाई कि जो यूजर है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट आर द पेन एरियाज दे आर करंटली फेसिंग, और आप उन पेन एरियाज के अराउंड जो है वो कस्टमर को जब डिलीवर करते हैं, सो दैट रियली गेट्स थ्रू, और कस्टमर उसके ऊपर उसको यूज करते हुए भी कन्वीनियंस फील करता. सो आई थिंक पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी रिसेंटली देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ चेंजेस, और बहुत से ऑनलाइन बिजनेसेस ऐसे हैं जो आपकी नीड आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग रियली वेल. सो एक रिसेंट जो फिनोमिनन बहुत ज्यादा है वो एक ज्वेलरी के अंदर ट्रेंड आया. So where you have a number of brands which are actually delivering on artificial jewelry. So how did it come up? क्योंकि अभी gold की prices are so high that I think पाकिस्तानी market के अंदर बहुत कम लोग हैं जो उसको afford कर सकते हैं. So what the businesses identified is कि there is a high desirability जहाँ पे लोगों को आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जरूरत है. सो ये एक मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस नाउ डेज आर अराउंड एरियाज जो कि कस्टमर का पेन पॉइंट है, एंड इट इज नॉट बीइंग कैटर्ड. सो अगर आप डिफरेंट बिजनेसेस देखें, जैसे करीम का हो गया, सो देयर वाज अ ह्यूज नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसको सर्व करने वाला कोई नहीं था. सो that was a requirement by the people, और once you identify कि एक requirement है या एक need है market के अंदर, you have the potential to deliver to that need, और वो financially viable भी है, तो आप उसको design करके product को you deliver to the customer, and that really kicks off. So इस तरह की बहुत सी ऐसी examples हैं recently which have come across, and we are moving into an entrepreneurial world जहाँ पे ये सारी चीजें बहुत matter करती हैं. So all these are an example, are examples of human centered design. अब उसके अंदर बहुत सी methodologies हैं जो organizations use कर रही हैं for designing those particular products and services, और उन methodologies की का अपना एक impact है, and they are being used at different stages of life cycle, डिफरेंट चीजों को मुहैया करने के लिए. सो अगर आप देखें तो एक तो सर्विस डिजाइन है मेथोडोलॉजी. सो आप सर्विस डिजाइन की मेथोडोलॉजी के अंदर यू आइडेंटिफाई कि कस्टमर का प्रॉब्लम क्या है जिसको आप फिक्स करना चाह रहे हैं, and you want a solution to that problem. So for example, जैसे मैंने अभी एक artificial jewelry की example दी है. So what people want is कि एक jewelry की need fulfill हो, and that should be affordable, and that should be convenient to get. So इसलिए अब online stores, when they work on it, so they identified the customers they want to focus on, और फिर उन्होंने discover किया कि this is the need of the market, and then you design your product according to that need. एक एग्जांपल जो बहुत ज़्यादा relevant है वो Run the Runway की एग्जांपल है, which is an international brand जो जो females हैं which want branded clothes all the time. So they identified the needs of those females, and then they worked on that need, और उन्होंने brand बनाया Run the Runway के नाम से. So what that brand do is that they rent out branded clothes to females. So जब वो rent out करते हैं branded clothes to females, so उनकी उस renting से ये होता है कि if I am a buyer जिसको हर second party के लिए एक branded dress चाहिए, so what I'll do is I'll get a branded dress in a few in much lower price as compared to buying a new one, और फिर मैं उसको यूज करके वापस कर दूंगी, एंड आई हैव माय मनी सेव्ड एज वेल. सो इस तरह के बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जो मार्केट के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स डिस्कवर करके उसके ऊपर लीज ऑन कर रहे हैं. सो हाउ डू दे डिस्कवर इट?
So you identify the customers that you want to deal with. आप for example एक you started off with a smaller setup जिसके अंदर आप कुछ लोगों से ड्रेसेस लेके रेंट आउट करके एंड देन यू आइडेंटिफाइड कि इसका प्रोसेस किस तरह बनना चाहिए, आप उसको प्रोटोटाइप करते हो. सो देयर कैन बी डिफरेंट वेज. अगर तो आप एक सर्विस डिजाइन कर रहे हो सो यू कैन रन अ स्मॉल टेस्ट फॉर दैट सर्विस, और अगर आप एक वेबसाइट या कोई ऐप बना रहे हो सो आप एक स्मॉल प्रोटोटाइप बना के ज्यादा सारे लोगों को भेज देते हैं, एंड देन बेस्ड ऑन दैट प्रोटोटाइप आप फीडबैक गैदर करते हैं, देन यू इम्प्रूव आइटरेटिवली. सो आइटरेटिव प्रोसेस ये है कि आपने एक छोटा सा वर्जन बनाया प्रोडक्ट का, स्मॉलर वर्जन, देन यू rolled it out to the end users, you get that feedback, and then you improve that version, and then you keep on improving that version with the passage of time. So you start small, you scale it up, and then you implement it and see what are the results. लेकिन उसका फायदा ही होता है सर्विस डिजाइन का, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके कस्टमर बेस कौन सी है, who are the people you want to capitalize on, और आप उनके साथ चीजें टेस्ट कर चुके होते हैं. सो आपकी एक तो एक्सपीरियंस कस्टमर का बेहतर होगा once you launch, and secondly आपकी scalability बेहतर हो जाती है, and the chances of losing money by launching a full-fledged project or product जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके होते हैं and then it fails, वो कम हो जाता है. So service design is one of the ways of working on a product or service, and then scaling it up to identify कि आपका customer base क्या चाह रही है, and then you proactively provide the customer with the things that they need. अभी कोई एग्जांपल ऐसी आप लोगों के जहन में आ रही है जो रिसेंटली आप लोगों ने देखा हो कि कोई ब्रांड लॉन्च हुआ हो एंड यू फेल्ट कि हाँ यार ये चीज मुझे चाहिए थी और ये पहले नहीं थी, या कोई सोल्यूशन इस तरह का आपको मिला हो which have been your pain area for a long while and you felt कि यार I wanted this thing and now I am getting it. Anyone? So let me force. Yeah, please. Yes, yeah. So I would say there is this app called InDriver. अच्छा. So हमारे जितने भी बुरे एक्सपीरियंसेस थे उबर को लेके, करीम को लेके, और जो भी हमारे कंसर्न्स थे कि पीक आवर होता है तो बहुत सारे पैसे बन जाते हैं और रश आवर्स में ऑब्वियसली बहुत पैसे बनते हैं, या अगर पीक आवर्स हैं तो ड्राइवर्स का मिलना बहुत मुश्किल होता है, मिल जाएंगे तो उस वक्त पैसों वाइज भी पीक आवर लगा होता है, तो वो सो InDriver ऐप ने मुझे लगता है कि वो सारे इश्यूज आपके सॉल्व कर दिए, और उसमें ड्राइवर्स की एक्सेसिबिलिटी भी है, अफोर्डेबिलिटी भी है. सो मेरा ख्याल है कि फौरी जो मेरे ज़हन में आ रहा है InDriver ऐप है. So आप InDriver ऐप कहाँ पे यूज कर रहे हैं मजाद? Are you Lahore based or? Yeah, I'm based out of Lahore. Based in Lahore, right? Okay, you are based in Lahore. So yeah, I heard about that app. Actually, I had a recent visit कुछ अरसे पहले. So I was unable to book Kareem. So somebody told me कि InDriver app जो है it's a much better app, so I can relate to it. So is it available throughout Lahore या कुछ particular areas के अंदर है? अच्छा, मेरे पास ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास वो इंस्टॉल्ड नहीं है, बट माय ब्रदर यूज्ड इट द अदर डे, और हमें यही जब इशू आ रहा था ड्राइवर्स को लेके, सो एवरी अदर ड्राइवर ऑफ उबर वाज कैंसलिंग आवर रिक्वेस्ट, और फॉर ऑब्वियस रीजंस पीएसएल के मैचेस एंड ऑल दैट स्टफ. सो वो InDriver ऐप केम इन वेरी हैंडी एट दैट टाइम. सो वो हमने उस वक्त भाई के मोबाइल पे उसको यूज की. सो आई डोंट नो मच अबाउट इट, मुझे नहीं पता कि वो कितने ज्यादा एरियाज को कवर कर रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पर जो हमारी परेशानी थी, जो कि बहुत रिपीटेडली हमें फेस करना पड़ती है, InDriver ऐप ने सॉल्व कर लिया उसको एग्जैक्टली उस पॉइंट इन टाइम पर जब हम वो फेस कर रहे थे डिफिकल्टी.
So it came in very Right. handy. Okay, so recently, Vajra, there have been a number of initiatives that are going on. जैसे एक Easy Fresh Technologies है. That app is actually covering the issues that the suppliers have regarding perishable items. So इस तरह के बहुत सी ऐसी apps हैं where people have identified the pain areas of a particular segment और उस पेन एरिया के ऊपर वर्किंग करके एंड दे डिस्कवर्ड इट एंड दे iteratively improved the app around it और उसको implement किया and they have done wonders in the market. So Swirl मैंने पहले भी नाम लिया is one example. Then there are Careem, Uber, these are a few of the examples. और ये सारी की सारी जो हैं ये recent times के अंदर they have become more and more important और इसीलिए service design has become more and more important क्योंकि once you identify the need of the particular segment and you want to cater to that particular need which has been unaddressed throughout the past, so आप फिर ways around निकालते हैं कि आपने उसको कैसे करना है and then how can you improve on it with the passage of time, and this is how the market is evolving. So service design plays a very critical role here, and there are different methodologies that you use at different stages of product development जो कि आपको help out करते हैं. And other one of that is the usability test. So usability test जो है वो हम तब करते हैं once your product is designed. So for example, we were running a usability lab in Islamabad. So जिस तरह market research आप करते हैं to identify customer needs, so you also run a study जिसके अंदर आप ये check करते हैं कि customer के लिए आपने जो product बनाई है वो user centric है भी या नहीं है. So for example मैंने एक application बनाई and because I am the creator of the application तो मुझे वो application बहुत अच्छी लग रही है, but once you take that application to the customer, to the market segment जिसके लिए आपने डिजाइन किए और आप उनको कहते हैं कि आपके सामने बैठ के यूज करें. So usability test is actually you hire and procure the recruit the participants जिन्होंने वो ऐप जो ultimate users हैं ऐप के, आप उनके personas के मुताबिक participants hire करते हैं. You plan your test and then you request those participants to conduct that test for you. So जब वो टेस्ट आपके सामने प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं या सर्विस को टेस्ट करते हैं तो देन यू आइडेंटिफाई कि अच्छा इसके अंदर तो ये लूपहोल्स हैं व्हिच कैन बी रेक्टिफाइड. सो फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐप बनाई और मैंने कस्टमर को टेस्टिंग के लिए बुलाया. सो यूजुअली लोग मोबाइल माउंटेड कैमरास यूज करते हैं. सो आप कस्टमर को मोबाइल देते हैं एंड यू गिव देम अ मोबाइल माउंटेड कैमरा. उस कैमरा से आप सारी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं एंड देयर इज अ फैसिलिटेटर और साथ एक जो है वो टेस्ट कंडक्टर होता है. सो जो टेस्ट कंडक्ट कर रहा होता है वो कस्टमर को, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है दराज की एग्जांपल ले रहे हैं. सो आप कस्टमर को एक यूज केस देते हैं, आप कहते हैं कि आप इससे एक मोबाइल ऐप मोबाइल परचेज करके दिखाएं. ठीक है. सो कस्टमर मोबाइल परचेज कर रहा होता है. सो एट एवरी स्टेप you ask the customer to speak out loud. वो बताता जाता है कि मुझे मैं कहाँ अभी मुझे मेरे ज़हन में क्या आ रहा है, अभी क्या आ रहा है. So while using the app or any website, so वो आपको step by step बताता जाता है कि what he is feeling, what he is going through. और जब जहाँ पे stuck हो जाता है आपको वो एरिया भी पता चल जाता है. So what you can do is after the test कि आप compile कर लेते हो कि customer कहाँ stuck हुआ था and then you go back and you fix those areas और आप analyze करते हो कि customer के लिए पेन एरियाज कौन से बहुत ज्यादा थे जिनकी फिक्सेशन की जरूरत है. यू फिक्स दोस एरियाज एंड देन यू रीटेस्ट. सो उससे ये होता है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाई हुई है या आपने कोई भी सर्विस बनाई हुई है जो आप चाह रहे हैं कि कस्टमर का रियल टाइम यूजेज आप देख सकें. सो वो आप देखते हैं एंड देन यू फिक्स दैट एज वेल. सो ये मेजरली एप्स, वेबसाइट्स, इन चीजों के लिए यूजेबिलिटी टेस्ट प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल एंड यू कैन आइडेंटिफाई द areas where you need to work on. So हो सकता है कि कलर स्कीम कस्टमर को समझ ना आ रही हो सकता है कि फॉन्ट साइजेस इतने छोटे हो कि कस्टमर क्लिक ना कर पा रहा हो. सो इसमें बहुत सी एग्जांपल्स मैं आपको दे सकती हूँ. सो वंस वी कंडक्टेड अ टेस्ट फॉर अ वेबसाइट customer के साथ. So when the customer was testing
that particular page on the mobile, तो एक छोटा सा आइकॉन था जिसके ऊपर वो जब भी क्लिक करता था तो वो उस पे क्लिक करने के बजाय या ऊपर हो जाता था या नीचे हो जाता था. So it meant that जहाँ पे आपने नेविगेशन के लिए कोई बटन दिया हुआ है या कोई लिंक दिया हुआ है, हाइपर लिंक दिया हुआ है, वहां पे आपने उसको इतना छोटा रखा हुआ है कि वो कस्टमर से क्लिक ही नहीं हो पा रहा मोबाइल के ऊपर. सो इस तरह की बहुत सी छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं व्हिच आई कैन कोट हियर. सो बाय टेस्टिंग द प्रोडक्ट या ऐप या वेबसाइट विद द कस्टमर, सो यू आइडेंटिफाई ऑल दोस गैप्स एंड देन यू ट्राई टू फिक्स दोस गैप्स. और जब आप उनको फिक्स करते हैं, सो नेक्स्ट टाइम कस्टमर को वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती. मे बी व्हेन यू टेस्ट अगेन, क्योंकि हमेशा अब आजकल आप लोगों ने बहुत वर्ड सुना होगा एजाइल का. हैव यू एवर हर्ड दैट वर्ड, एजाइल वे ऑफ वर्क, एजाइल प्रोडक्ट डेवलपमेंट? Gee, I've been the practitioner of Agile for last 15-16 years actually. So the iterative process actually is where you improve. ठीक है. सो वो जो एजाइल के अंदर आइट्रेशन की बात करें, सेम गोज फॉर यूजेबिलिटी टेस्ट एज वेल. सो आपने एक प्रोटोटाइप बनाया या एक स्मॉलर वर्जन ऑफ अ प्रोडक्ट बनाया एंड देन यू टेस्ट इट विद योर कस्टमर्स. सो आपको उसके इम्प्रूवमेंट एरियाज पता चल जाते हैं. वंस यू आइडेंटिफाई दोज इम्प्रूवमेंट एरियाज एंड यू फिक्स दोज इम्प्रूवमेंट एरियाज, सो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कस्टमर को कोई और इशू फेस करना पड़ रहा हो व्हेन यू टेस्ट अगेन, बट एटलीस्ट जो मेजर इश्यूज होते हैं वो यूजेबिलिटी टेस्ट के अंदर 70 to 80% क्वालिटेटिव इश्यूज आप आइडेंटिफाई करके फिक्स कर चुके होते हैं. सो यूजेबिलिटी, सो ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन के अंदर जो डिफरेंट मेथोडोलॉजीज आप यूज करें अलोंग द कस्टमर लाइफ साइकिल, उसके अंदर यूजेबिलिटी इज वन टेक्निक जिसके अंदर आप उसकी प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी चेक कर सकते हैं. सो वेदर इट्स अ वेबसाइट, एक प्रोडक्ट है या कोई ऐप है, सो यू कैन टेस्ट दैट इन रियल टाइम विद द कस्टमर और आपको देन एंड देन उसकी प्रॉब्लम्स पता चल जाती है एंड यू कैन फिक्स दैट. सो द लास्ट थिंग दैट आई विल बी कवरिंग अराउंड ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन इज कस्टमर जर्नी मैपिंग. सो कस्टमर जर्नी मैपिंग एंड टू एंड जर्नी है कस्टमर की. सो एक फॉर एग्जाम्पल दो चीजें इसके अंदर क्रिटिकल हैं. सो वन इज कस्टमर जर्नी डिजाइन एंड द सेकंड इज कस्टमर जर्नी मैप. सो व्हाट यू डू इज, जब आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करते हैं, सो आप उसके कस्टमर जर्नी ऑलरेडी डिजाइन भी करते हैं, प्री डिजाइन करते हैं प्रोएक्टिवली. सो यू डिजाइन के इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ कस्टमर इंटरेक्शन किस तरह होगा. ठीक है. कंप्लेंट आएगी तो वो कहाँ जाएगा, कस्टमर कौन कौन से चैनल्स अवेलेबल होंगे, उन चैनल्स के ऊपर प्रोसेसेस क्या होंगे, कस्टमर परचेज कहाँ से करेगा, अगर उसने डीएक्टिवेट करना है वो कहाँ से करेगा, XYZ. So you design an end-to-end journey of the customer for a particular product. लेकिन एक actual journey है जो customer face करता है. So for example, customer ने buy करनी थी एक product and he went to your site और वो buy ही नहीं कर सका. So आपकी जर्नी का पहला पेन एरिया यहीं पे शुरू हो जाता है. So जब आप जर्नी डिजाइन करते हैं तो हो सकता है कि you think you have designed a seamless journey और कस्टमर को उस पूरी प्रोसेस के अंदर कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा. बट व्हेन यू एक्चुअली मैप दैट जर्नी विद द कस्टमर और आप देखते हैं कि आपको 2-3 जगहों पे कस्टमर के लिए इट वाज अ पेन एरिया टू वर्क विद द ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस दैट जर्नी. सो आप क्या करते हैं कि आप उन पेन एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको फिक्स करते हैं. So there can be areas जहाँ पे customer was very excited during the journey. आपने उसको कोई ऐसी exceptional experience दिया कि he was very happy, and there can be areas जहाँ पे इतना बुरा experience था customer का कि he was very disgruntled. So when you map the journey, you actually see end to end कि उस particular product या सर्विस के अंदर कस्टमर को प्री परचेज टू पोस्ट परचेज क्या क्या एरियाज थे जहाँ पे उसको या तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है या ही और शी वाज वेरी हैप्पी. सो आप उसके पेन एरियाज को भी फिक्स करते हैं एंड व्हेन देयर इन द एरियाज वेयर ही और शी वाज वेरी हैप्पी, आप उसको रीइंफोर्स करते हैं कि ये चीजें इसी तरह ऑपरेट करें.
So customer journey mapping is a very buzzword these days, और बहुत ज़्यादा सुनने में भी आता है कि आप एंड टू एंड कस्टमर की जर्नी डिजाइन करते हैं और मैप करते हैं टू सी कि कस्टमर को दरमियान में कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं आई है, अगर आई है तो वी नीड टू फिक्स दैट पर्टिकुलर एरिया। और इसके अंदर आप ओमनी चैनल एक्सपीरियंस भी इंश्योर कर सकते हैं। अगर आप जर्नी एंड टू एंड मैप करते हैं एंड कस्टमर मूव्स अक्रॉस डिफरेंट चैनल्स, सो आपको वहां पे भी पता चल जाता है कि अक्रॉस चैनल्स उसका एक्सपीरियंस किस तरह का था। एक वीडियो मैंने इससे रेलेवेंट भी आप लोगों के लिए डाउनलोड की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वॉइस इशू आ रहा है, सो आई विल सेंड दैट वीडियो अक्रॉस। सो उसके अंदर एक कंप्लीट जर्नी मैपिंग कस्टमर की दिखाई हुई उन्होंने। सो फ्रॉम ऑन चेकिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑनलाइन टू ट्राइंग दैट product and ordering that product, और फिर because of shortage of time the customer had to go to the retail channel and check if she can get the product from there, और फिर वो retail channel से product लेती हैं and then post purchase उसको try करती हैं and then she comments and gives her feedback on the Facebook and other channels. So वो सारी एक end to end journey है जो customer की आप डिजाइन भी करते हैं and then you map that journey as well to see कि कहीं कोई broken areas या broken parts तो नहीं है जिनको fix करने की जरूरत है, ताकि from pre-purchase to post-purchase customer की journey smoother for with a particular product or service. So this is also one of the methodologies that is used in human-centered designing, and it helps identify customer के real-time experiences and to fix any glitches or to reinforce any good experience that he or she had during the journey. So that's the end of presentation from my side. If you guys want to discuss anything, kindly do let me know. And I'll also share a few videos that I think will help you out. क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ areas identify किए थे 2022 में, which are the changing trends of CX that you can view in those slides as well. So do you want to discuss anything, any input from your side? Okay, guys. Yeah, so I would like to thank you, Sarah, and Aspire particularly for this useful session. It was very useful, very very knowledgeable, and I think since we are the early adopters of customer experience and the entire concept around it, so we should be arranging sessions like this, and we should get together quite often to discuss more and more on customer experience and share ideas and our experiences, I guess. So For sure. ताकि वो एक कल्चर सारा डेवलप हो जाए और सब लोगों को इस हवाले से ऑब्वियसली अवेयरनेस भी हो और लोग इसको इनकॉर्पोरेट भी करें अपनी प्रोडक्ट्स में, अपनी सर्विसेज में. So thank you very much. Thank you so much, Pachahat. So what I can do is I'll share my email ID with you guys. So if you guys are interested in learning more, you can always write to me and I can share some videos or some examples from my side. Secondly, I think this is an area which needs a lot of attention moving on, but the market has not been very receptive of the concept till now. With the passage of time, I think it will gain the traction that it needs in Pakistani industry as well. But thank you so much for the participation. I am going to share a few videos with you. I think that they will be a great learning. And if you really want to see some real life examples of usability test or customer journey mapping or
service design, I can share that with you as well. So thank you so much for your participation. Hope you like the session.